Hello everybody. Good evening. Good evening everybody. Let me share my screen, then we'll be starting the class. Okay. So, good evening everybody. So this is like we'll be starting with the question. Before that, let me go back to the previous slide wherever we left in the class. Okay. So we are in the chapter that is our we can say human health and disease. Okay, in this chapter we are right now, and we'll continue from this particular chapter itself. Like wherever we left, we'll continue from that particular portion. Well, so I hope my video is clearly visible to everybody. My screen is clearly visible to everybody, and I am audible clearly. Okay. Well, let's check for the technical checkup. Technical poll I have launched now. If I am audible clearly and if my screen is visible clearly, click on yes option. Do it first. Everybody do it. Great. Okay then. Well, I'm ending the poll now. Then we'll be starting the class. Okay. I'm assuming that I'm clearly audible and my screen is clearly visible to everybody. Okay. Well, so let us start the class. Human health and disease. In the previous class, we are done with the some of the immunity disorder, you can say, right? Immunity disorder in the sense the disorder or the diseases which happens to the immune system itself. Well, we know that the immune system is there for the protection, but sometimes what happens, the protective body also get affected. For example, Indian Army is there, okay, and it is there to protect us against foreigners in the sense invader, okay, invaders in the sense the other country people like Pakistani, Atangwadi, and many more will be there. Pakistani, Chinese, many more people are there. They will be trying to enter into our country. They will create violence in our country. They will be doing many kinds of violence like bomb blasting or anything. Okay, so Indian Army is there to protect us against all those harmful people. Okay, but sometimes what happens, while giving protection as well as they also have their personal life, right? So this Indian Army got affected either maybe by the different foreign like foreign peoples, we can say. Okay, so in the same way, this is going to happen in human health and disease. We are talking about the disease that occurs in the immune system. Okay, that can be your autoimmune disorder, that can be your I can say immunodeficiency disorder, that can be your hypersensitive disorder like allergy. Many of the people usually like nowadays उनको allergy होता है, ठीक है. So चीजें हमने पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लास में. पर्नीशियस हार्निया बताया था, माइस्थेनिया ग्रेविस बताया था मैंने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर. ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस देखा था, पर्नीशियस एनीमिया दैट इज डिस्ट्रक्टिव एनीमिया उसके बारे में पढ़ा था, हसीमोटो थायराइड डिजीज के बारे में बताया था, ठीक है. Then your IDDM, that is insulin dependent diabetes mellitus, that is also done in the previous class. Now in today's class we will be starting with this particular question is visible on your screen now. Antibodies produced against acetylcholine receptor in which particular disease? कौन सा डिजीज में acetylcholine receptor के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन बी पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, and option D none of the above. Well, I'm launching poll for the particular question and I am assuming that you can answer to the question. Guys, do it fast. Hello Jayashree, hello Akbar, hello Appu, hello Lisha. Okay, I have launched poll for the question and I'm assuming that you can answer to the question. 20 seconds gone. People are answering. People have started answering. Okay, 50% people have written their answer so far.
I want remaining people to answer to the question. Great. Hello, yes. Hi. Perfect, Appu. Ekdam sahi. Well, I want rest of the people to answer to the question. 40 seconds gone. Last 20 seconds remaining. Try to answer to the question as early as possible. Okay. So, okay then, okay. Last 10 seconds remaining, then I'll be ending the poll. Well, I'm ending the poll now. Sharing the result with the people. Result is like 50% people have chosen option A, 50% people have chosen option B, option C, and option D is not chosen by anyone. Okay. So let us discuss this particular question. इस question को थोड़ा सा discuss करते हैं. Whenever you are talking about acetylcholine receptor, let us check all these three digits one by one. Multiple sclerosis अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, but देखेंगे इसको भी. Well, when you are talking about myasthenia gravis, what happens? It happens in the neuromuscular junction. It affects the neuromuscular junction. Neuromuscular junction को ये affect करता है. Okay, and this pernicious anemia, it will be affecting the intestinal system, or we can say it leads to deficiency of vitamin B12, and that deficiency of vitamin B12 leads to less number of RBC or less quantity of blood in the body. So it leads to blood deficiency ultimately. It leads to blood deficiency ultimately. How it happens? मैंने previous class में बताया था. Anyway, let us talk about this two things separately. एक एक करके देख लेते, फिर आंसर आ जाएगा अपन को. ठीक है. Now I am talking about the myasthenia gravis. What happens in myasthenia gravis? Suppose this is your cell body cyton. We also say sometimes इसको बोलते हैं cyton. ठीक है. और ये अपना dendrites है. It is going everywhere. This is the dendrites. Okay. So this is the dendrites. Is that clear to everybody? And one of the dendrite will elongate like this, and this particular structure is called as your axon. इसको axon कहा जाता है. You must be knowing this one. Axon may be myelinated, may not be myelinated. If myelinated cells are present on the axon, then that is your myelinated neuron. That will be called as your myelinated neuron. Okay. And now at the end of the neuron, you must observe nerve ending like this. इस तरीके का nerve ending present होता है. Okay. And this nerve ending gets connect to the other neuron sometimes, and in some cases what happens, suppose this is a muscle, तो muscle यहाँ पे आ जाएगा, muscle के साथ ही connect होता है कभी. Suppose this is your skeletal muscle, I'm saying. कौन सा muscle? Skeletal muscle है suppose. तो skeletal muscle के साथ ये connect हुआ है. So now the information will come in this direction. The stimuli will be responded by the dendrites or the neuron, and it will be transferred to this particular cyton or cell body. इसी direction में ऐसे आया. क्या आया? Stimuli. Okay. This stimuli will enter and it will move in this direction. Stimuli ऐसे move करके आ रहा है. Stimuli. Stimuli is any kind of disturbance. किसी भी तरीके का external disturbance को stimuli कहा जाता है. Hello, Mohammad Raja. Welcome to the class. Okay. So now what happened? So this is how the stimuli will enter here. Okay. Now in this particular region, this particular electrical signal needs to be converted into chemical signal, and that chemical signal will be given to the muscle. At that time what happens? Electrical signal or that impulse will be converted into, in this particular region, it will be converted into this black color structure. ठीक है. ऐसे होता नहीं है अक्सर, मतलब ऐसे ब्लैक कलर वाला कुछ होता नहीं है. मैं जस्ट टू डिलीवर यू द लेसन मैं बता रहा हूं कि ऐसा कुछ होगा. So the electrical signal will be converted into some chemical signal, or that is called as your acetylcholine. That is called as your acetylcholine. ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं इसीलिए जल्दी थोड़ा सा ले लूंगा. So I'll be taking this one a little bit
faster. This is acetylcholine. Okay, this acetylcholine get released from the nerve ending and it will goes and bind to the acetylcholine receptor site which will be present on the muscle. So on the muscle, this is your muscle, और ये muscle में acetylcholine receptor sites will be there. Suppose I am making that acetylcholine receptor sites here. This is one acetylcholine receptor site. This is another acetylcholine receptor site. Another acetylcholine receptor site. These are nothing but the acetylcholine receptor site. तो ये क्या क्या है? ये अपना acetylcholine receptor site. One second. This is nothing but your acetylcholine receptor site. Okay. So acetylcholine will come and bind to the acetylcholine receptor site. In general, this happens. यही होता है in general. Okay. और फिर जो neural coordination होता है, जो conduction होता है, that will continue. This is going to happen in normal situation. But when a patient or a particular person is affected with myasthenia gravis, and in that case, this particular acetylcholine receptor will get affected. Why? Because an antibody will be produced. An antibody will be produced which will be looking similar to acetylcholine. I mean, it will do mimicry of the acetylcholine. So मैं अभी उसको green color में लिखता हूँ. Antibody will be produced and the antibody will mimic acetylcholine. ये क्या करेगा? मिमिक करेगा. किसका मिमिक्री करेगा? It will mimic acetylcholine. Okay, so acetylcholine का मिमिक्री क्या? मतलब it will be completely looking like acetylcholine. Its nature, its appearance, and everything will be like acetylcholine. So now what it going to what it is going to do? What it will be going to it is going to do is acetylcholine is going to supposed to go and bind to the acetylcholine receptor site. But now what happened? Antibodies are produced. So I am making the antibodies here. These green color structures are antibodies which are looking similar to acetylcholine, similar like acetylcholine. So these are what? These are your antibodies. So what is going to happen? As it is looking similar to acetylcholine, it will go and bind to this particular acetylcholine receptor site. तो अभी क्या हो जाएगा? ये जहां पे बाइंड किया है ना acetylcholine, इसके जगह पे कौन बाइंड करेगा? These antibodies they will come and bind to this region. यहाँ पे आकर के एंटीबॉडी ऐसे बाइंड कर जाएंगे. यहाँ पे आकर के एंटीबॉडी बाइंड कर जाएंगे. So now the acetylcholine receptor site is blocked. अभी क्या हो गया? ये acetylcholine receptor site जो है ये ब्लॉक हो गया. And when it get blocked, there will be no conduction of neuron. ये ब्लॉक हो गया तो न्यूरॉन का कंडक्शन नहीं होगा. अभी न्यूरॉन का कंडक्शन नहीं होगा. I hope this is clear to everybody. I hope this is clear to everybody. And this happens in myasthenia gravis. ये किसमें होता है? myasthenia gravis में होता है. Option A will be the correct answer to the question. Pernicious anemia is something different. What happened? In pernicious anemia, vitamin B12 never get absorbed. Why? Because absorption of vitamin B12, absorption and digestion of vitamin B12 is done when there will be presence of Kessel intrinsic factor. And the Kessel intrinsic factor is a factor which is synthesized by parietal cell of the gastric gland. ये तो पूरा मतलब जाना पड़ेगा तुमको फिजियोलॉजी में. जब फिजियोलॉजी में जाओगे तभी समझ आएगा. मैं तुमको दिखा सकता हूँ वैसे अगर चाहोगे तो मैं प्रीवियस स्लाइड्स में आकर के दिखा सकता हूँ. देखो ये जो हो गया ना अपना, दिखा देता हूँ तुमको थोड़ा सा. ये देख लो, पर्नीशियस और डिस्ट्रक्टिव एनीमिया. एंटीबॉडीज आर फॉर्म अगेंस्ट कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर
और ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कहां पे सिंथेसाइज होते हैं? पेरिएटल सेल से। और पेरिएटल सेल में कौन प्रेजेंट होता है? पेरिएटल सेल के अंदर ये जो पेरिएटल सेल्स होते हैं, दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एंड दिस पेरिएटल सेल्स आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, प्रेजेंट होता है उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये पेरिएटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तब समझ आएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेरिएटल सेल्स होता है, ओके। देन योर आई कैन से म्यूकस और ग्लोबुलर सेल्स होता है, ओके। So different cells will be there. Goblet cells will be synthesizing mucus, parietal cells will be synthesizing Kessel intrinsic factor, okay. So these cells will be there. So this is synthesizing Kessel intrinsic factor, and the role of this Kessel intrinsic factor is to help in, here you can see it is to help in absorption of vitamin B12 in small intestine. This SI represents small intestine, okay. In general this happens, and when vitamin B12 is absorbed, that vitamin B12 help in production of the blood. But if somebody is affected with destructive or pernicious anemia, the antibody will be produced against the Kessel intrinsic factor. So there will be no Kessel intrinsic factor, and if there is no Kessel intrinsic factor, absorption of vitamin B12 will get restricted. And when there will be a restriction or barrier in the absorption of the vitamin B12, this leads to reduce in production of the blood. This is pernicious anemia, okay. Well, I hope this is also clear to everybody. If this is clear to everyone, click on yes option, guys. I hope this is also clear to everybody. Take a screenshot, then I will be going to the next slide. Great. Jaysrika clear hai. Mohammad Raja, Akbar, Appu, Lisha. What do you people are saying? Like, is this clear to you? Okay. Lisa, is this clear to you? Okay. Okay, then I'm moving to the next slide now. So I was in this particular section. ये भी इसका भी screenshot ले लो जल्दी से. Take a screenshot of this particular section. ये मैंने diagonally बनाया because there was no space. Well, okay. So option A will be the perfect answer. That acetylcholine receptor site के लिए और receptors के लिए जो antibodies produce होता है, that happens in case of myasthenia gravis. Okay. Now we'll be talking about multiple sclerosis. Okay, what is multiple sclerosis? Multiple sclerosis in the next slide हम बात करेंगे उसके बारे में. In multiple sclerosis again the neuron will get affected, but there is a difference between multiple sclerosis and myasthenia gravis. In myasthenia gravis, neuromuscular junctions were getting affected. I'm going a little bit faster, guys. I'm mentioning, अभी से ही मेंशन कर दे रहा हूं कि थोड़ा सा फास्ट चलूंगा. कोई दिक्कत है मेरे को बोलो. I'll be repeating that particular section if you are having any kind of problem then. Okay. Well, so in multiple sclerosis, antibodies will be produced against myelin sheath. Antibody will be produced against myelin sheath of the nerve cell. And what are myelin sheath? These myelin sheath are present on the nerve cells and they act as a insulating device. Remember this one. ये myelin sheath जो होते हैं वो insulator की तरह काम करते हैं. They are insulator and they are secreted by nasal granules which are present in the myelin sheath. यहाँ पे present होता है कुछ granules. इनको nasal granules कहा जाता है. Nasal granules कहा जाता है. निजल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है और वही निजल ग्रैन्यूल्स इसको सिक्रेट करता है, सिंथेसाइज करता है. ओके, नाउ माइलिन शीथ एक्ट्स एज एन इंसुलेटर bodies are produced against this particular myelin, and if it happens, this causes neurological dysfunction. If the myelin sheath or the insulator part will get infected or will get destroyed, then there is a chance of very slow conduction of nerve impulses. When you talk about the nerve impulse, now conduction of the nerve impulse, if you have studied in like which particular chapter, that is control and coordination or something is there, right? Okay, so in that chapter you might have studied about this one.
right guys? So how the conduction of nerve impulse happens and what is the role of this myelin sheath? In general, we know that myelinated nerves are there as well as non-myelinated nerves are there. Myelinated nerves will be conducting 10 to 20 times more than the non-myelinated nerves or neurons. दोनों न्यूरॉन्स है अपने पास, माइलिनेटेड होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है. नॉन माइलिनेटेड जितना स्पीड में कंडक्ट करेगा उससे 10 to 20 टाइम्स फास्टर कंडक्ट करता है माइलिनेटेड से, बिकॉज देयर इज इंसुलेटर इन बिटवीन देम, और इंसुलेटर होने की वजह से यहाँ पे ये इजी हो जाता है कंडक्शन में. ये आपने पढ़ा होगा अपने फिजियोलॉजी में, ठीक है. सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस when the antibodies are produced against the myelinated sheath, the myelinated sheath will get destroyed and this leads to dysfunction of the neurons. I hope this is also clear to everybody, and this is a systemic autoimmune disorder. Systemic है ये, सिस्टम को पूरा कंप्लीट ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसीलिए इसको सिस्टमिक कहा जाता है. इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो था ये ऑर्गन स्पेसिफिक था. ब्लड डेफिशिएंसी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये ऑर्गन स्पेसिफिक है. बट ये वाला जो है ये कंप्लीट नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, इसी की वजह से इसको सिस्टमिक डिसऑर्डर कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज योर रिमेटॉइड आर्थराइटिस. इट इज आल्सो अगेन सिस्टमिक, ये भी सिस्टमिक है. दिस रिमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, सो यू कैन सी व्हाटएवर आई हैव रिटन हियर. Okay, what happened in rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis is a disease which happens to most of the people when they become this particular people, like 40 to 60 एज ग्रुप में जो people आते हैं ना, उनको हो जाता है. और मेनली वुमेन्स को होता है, because they have, why women, why only women? Because in case of women what happens, their muscular tissue, their conductive tissue, bone tissues, these are not that much strong, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मूवमेंट इतना नहीं होता है, इसी के वजह से. वेल नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. 40 to 60 ईयर वाले वुमेन्स के केस में खास करके होता है, एंड इट इज ए कॉमन डिसऑर्डर, कॉमन इम्यून डिसऑर्डर. दिस हैपेंस, और व्हेन दिस पर्टिकुलर डिजीज हैपेंस, द साइनोवियल मेम्ब्रेन secretes some abnormal granules, and that abnormal granules is called as your पेनस. पेनस कहा जाता है उसको, एबनॉर्मल ग्रैन्यूल सीक्रेट करता है उसको, क्या किस नाम से जाना जाता है? पेनस के नाम से. रिमेंबर दिस वन, पेनस आर दी abnormal granules which are secreted by the synovial membrane. This is the synovial membrane, you can see here, I can show you. This is your synovial membrane. When it got enlarged, इसको enlarge करके जब हमने देखा तो ऐसा दिखा, और इसी के अंदर देखो ये वाला जो है ना अपना साइनोवियल मेम्ब्रेन है. थिकनिंग ऑफ दी साइनोवियल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है. This one representing synovial membrane, and this synovial membrane is going to synthesize or secrete some granules, and these granules is your penis. And due to deposition of the penis or these abnormal granules, fiber tissue they get ossified. There will be ossified in the sense small pores will be there. Pore वहां पे formation होगा, ossified हो जाएगा, और ossified होने की वजह से movement अच्छे से नहीं होगा. The synovial fluid will get destroyed. ये जो synovial fluid है ना, ये synovial fluid जो होगा, इसका quantity धीरे धीरे reduce होता जाएगा. ये reduce होता जाएगा क्योंकि जो membrane है वो thick होता जाएगा. membrane जो है वो thick होता जाएगा, swell करता जाएगा, and it will occupy the space of the synovial fluid, and this will result in the painful movement of the joints as well as swelling of the joints. Is that clear to everybody? And it occurs due to presence of the rheumatoid factor. ये भी एक क्वेश्चन है, that rheumatoid factor is your IgM. ये चीज दिमाग में रखो, जो rheumatoid factor यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो rheumatoid factor क्या है? वो अपना IgM का यूज करते हैं. दिस इज योर IgM. रिमेंबर दिस वन, IgM, rheumatoid arthritis or rheumatoid factor, IgM. Okay,
नेक्स्ट दिस पर्टिकुलर अगेन एबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स का नाम क्या है? पेनस। ये क्वेश्चन है, 2 सवाल। ठीक है, ठीक है। सो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट वन इज योर रिमेटॉइड फैक्टर आईजीएम ज्यादा एक्यूमुलेट करेगा, एंड सेकेंड वन पेनस फ्रॉम द साइनोवियल मेम्ब्रेन, abnormal granules from the synovial membrane. Okay, okay, then I am moving to the next slide. Well, here is a question for you people. Question is visible on your screen now. The question is like penis is related to which disease? कौन सा disease के साथ related होता है penis? Okay, अभी मैंने बताया है, and I am going to launch poll now. So try to answer to the poll. poll को answer कर दो जल्दी से guys. पोल में आंसर करो। अकबर अली, वेरी गुड अकबर अली। डू इट फास्ट। Okay, I'm ending. Last 10 seconds remaining. Then I'll be ending the poll. I've ended the poll, sharing the result with the people. Result: no one have chosen option A and B. Option C chosen by everyone. Option D is again not chosen by anybody. Okay. Okay now. So when you are talking about penis is related to which disease? Penis is the granules, abnormal granules, I can say. 1 second. It is your abnormal granules. जो होता है किसके केस में? रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। नॉट इन माइस्थेरिया ग्रेविड, नॉट इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नॉट इन हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ठीक है, किसी के केस में भी नहीं होता है। 1 सेकेंड ना। ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 immunodeficiency disorder that is like that happens due to deficiency in the immunity. Okay, causes due to gene mutation, gene deficiency, infection, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और एक्सीडेंट। किसी के भी वजह से क्या हो सकता है? ये हो सकता है इम्यूनिटी पावर जो है अपना वीक हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? इम्यूनिटी जो होता है वो वीक हो जाता है। इम्यूनिटी गेट वीकेंड, इम्यूनिटी जो होगा वो वीक हो जाएगा। Okay, so examples: Dees-Orr syndrome or thymic aplasia, Burton's globulinema, SCID that is severe combined immunodeficiency disorder, and HIV/AIDS. ये कुछ examples है। Dees-Orr syndrome, this is also called thymic aplasia. Burton's agammaglobulinemia, Burton's agammaglobulinemia, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नेम देगा नहीं, डोंट वरी। स्कीड जो कि हमेशा क्वेश्चन बनता है, HIV/AIDS जो कि हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, HIV/AIDS हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। स्कीड खास करके देख लो, स्कीड से सवाल आता है, CBSE लेवल में भी आ जाते हैं सवाल। ठीक है, वेल स्कीड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इसको हम लोग और एक स्लाइड लेते हैं, वहां पे देखेंगे। ठीक है, और एक स्लाइड लेते हैं, वहां पे देखेंगे, फिर बेहतर रहेगा। ओके, लेट मी ओपन ए स्लाइड।
Just wait for 1 minute. Okay, so we'll start from here now. I hope my screen is visible to you people, right? Let me check. Probably screen is visible to everyone. Okay, so this is all about your SCID. SCID के बारे में अगर बात करें तो ठीक है, ठीक है. क्या होता है in general? SCID is a severe combined immunodeficiency disorder. Okay, and a particular person affected with severe combined immunodeficiency disorder के केस में क्या होता है, right? Due to gene mutation और डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एडीए, जीन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एडीए जो एंजाइम होता है ना, वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता है अच्छे से. इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे तो जो एडीए एंजाइम होता है जनरल कंडीशन में क्या होता है मैं बताता हूँ, फिर हम लोग दूसरे चीजों के बारे में बात करेंगे. इन जनरल दिस इज नॉर्मल टी सेल प्रोडक्शन जो बताया हुआ है. ये जो कंडीशन है ये हेल्दी अपियरिंग चाइल्ड के केस में है. क्या होता है हेल्दी अपियरिंग चाइल्ड के केस में थाइमस प्रेजेंट होता है, राइट, एंड बोन मेरो प्रेजेंट होता है. इन बोन मेरो this particular lymphocytes will be produced. B lymphocyte as well as T lymphocytes will be produced. In the bone marrow itself, B lymphocyte will get mature, whereas the T lymphocyte get matures in the thymus region. And for its maturation, a particular enzyme is required, and that enzyme is called as your adenosine deaminase. Is that clear to everybody? आया सबको समझ में? So what happens, T lymphocyte के maturity के लिए, ठीक है, क्या चाहिए हमको? ADA proper amount में चाहिए. And what is that ADA? ADA is an enzyme that is required for the maturation of the T lymphocytes. ADA का full form क्या है? Adenosine deaminase. Adenosine deaminase. Adenosine deaminase. Is that clear to everybody? Adenosine deaminase. ठीक है, आया समझ में सबको? यही एडिनोसाइन डीएमिनेज के प्रेजेंस में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट मेच्योर होते हैं और नॉर्मल में प्रोडक्शन होते हैं, एंड देन दी लाइक जो अपना प्रोसेस होता है वो पूरा आगे होता है. क्योंकि अगर टी लिम्फोसाइट अपने पास नहीं है तो फिर आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा. अपना जो इम्यूनिटी है ना वो फिर वीक हो जाएगा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट वही है जो कि इंफॉर्मेशन लेकर के बी लिम्फोसाइट के पास जाता है. वो इंटरमीडिएट है, अगर वो नहीं होगा तो बी लिम्फोसाइट भी नहीं बन पाएंगे. ओके, सो दिस हैपन इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल. बट अगर किसी को ये डिजीज हुआ है, आया समझ में, तो मतलब उसके केस में अगर म्यूटेशन हो गया है, सो ड्यू टू दैट म्यूटेशन व्हिच पर्टिकुलर पोर्शन in the gene which is responsible for synthesizing this particular enzyme. ये जो एंजाइम है ADA is an enzyme, और ये प्रोटीन होगा, you know, like all the enzymes are protein modified. जो एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन मॉडिफाइड होते हैं. समझ आया ना बात सबको? सो ये जो एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम है ये प्रोटीन मॉडिफाइड होते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ. एडिनोसाइन डीएमिनेज जो होते हैं, एडीए जो होते हैं ना, ये एंजाइम्स है, और एंजाइम जो होते हैं दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन. दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, राइट? सो एडिनोसाइन डीएमिनेज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, एंड प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम certain mRNA, and the mRNA are formed from certain DNA. So there must be some DNA or some sequence of the DNA is responsible for synthesizing this ADA enzyme. Okay, आया समझ में? This ADA enzyme, यही ADA enzyme जो है
आगे जा करके हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट का, ये इमेच्योर टी लिम्फोसाइट, 1 सेकेंड, इधर मैं इसको अच्छे से लिख दूं तो ये क्या बनता है, ये अपना जो मरता है ये टी लिम्फोसाइट है, बट ये टी लिम्फोसाइट जो है वो किस तरीके का है, इमेच्योर है, राइट। एंड इधर वाला जो है, एंड इधर वाला जो है ये टी लिम्फोसाइट इन प्रेजेंस ऑफ एडीए एंजाइम ये मेच्योर हो जाता है, ओके, ये मेच्योर हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो एडिनोसाइन डीएमिनेचे एडीए जो है वो टी लिम्फोसाइट, इमेच्योर टी लिम्फोसाइट को मेच्योर में वो कन्वर्ट करता है, मेच्योरेशन में हेल्प करता है, प्रोलिफरेशन में भी हेल्प करता है। मेच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन दो चीजें ये कराता है, मेच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन। मेच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन कराता है। Is that clear to everybody? Maturation and proliferation करवाता है। Well, so when this particular like a person is affected, so what happen उनके केस में क्या हो जाएगा, ये डीएनए जो है ना ये म्यूटेट कर जाएगा। अगर ये म्यूटेट कर गया, डिफेक्ट इसमें देखने को मिला, म्यूटेट कर गया या फिर डिफेक्ट देखने को मिला, तो इसकी वजह से एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बना तो एडीए नहीं बनेगा, और एडीए नहीं बना तो फिर ये वाला प्रोसेस भी नहीं होगा, और टी लिम्फोसाइट का दिस विल रिजल्ट इन, इससे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट जो होगा, टी लिम्फोसाइट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट विल गेट रिड्यूस्ड, दैट इज व्हाट हैपेंड हियर, दैट इज व्हाट हैपेंड हियर, यू कैन सी हियर हेल्दी अपीयरिंग सीड अपना जो था हेल्दी दिखेगा लेकिन स्किड है, उसको हेल्दी दिखेगा लेकिन उसको क्या है, स्किड है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, हेल्दी दिखेगा लेकिन वो बार बार बीमार पड़ेगा, ठीक है, वेरी लो और एब्सेंट ऑफ टी प्रोडक्शन, देख लो वेरी लो undetected T lymphocytes will be there. Okay, so this disease is called as your severe combined immunodeficiency disorder, and this was treated like ऐसा एक डिजीज हुआ था एक पर्सन को, बायोटेक्नोलॉजी में उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड शी गॉट ट्रीटेड, अमेरिका का एक लड़की थी 5 साल की शायद, उसका लिम्फोसाइट को बदल दिया गया था, ठीक है, और उसमें डाला गया था ये पर्टिकुलर डीएनए का जो भी सीक्वेंस इसको सिंथेसाइज किया कर सकता है, that was done. Okay, severe combined immunodeficiency disorder was handled and like cured or treated by some set of doctors in a अमेरिकन पेशेंट, एक अमेरिकन गर्ल चाइल्ड थी, उसके केस में इसका ट्रीटमेंट किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी के में अंदर उसको पढ़ोगे एंड बात करेंगे उसके बारे में। Well, so I'm moving back to this particular slide. If you have any kind of doubt, just let me know, and if you don't have any doubt, take a screenshot, then I'll be going to the next slide. Jaldi se screenshot le lo, take a screenshot, do it fast. Oh sorry मैंने pause कर दी क्या, pause करा दिया मैंने, okay, take a screenshot, do it fast. Take a screenshot soon. Okay, so I'm moving to the next slide now. Okay, now we'll be talking about the AIDS, HIV. Okay, what happened in HIV disease? Okay, HIV AIDS के बारे में अगर बात करें तो HIV is some different kind of thing, AIDS is some different kind of thing. HIV is the situation when a person is getting affected
by the HIV virus, human immunovirus, which will be attacking the immune system of human. वो क्या करेगा? Human का immune system को attack करेगा, ठीक है? And AIDS is something that is a set of disease that happens when the immunity of the human get affected by HIV. Okay, so वो होता है. SCID, no, that is not like sexually transmitted disease. It is a defective disease that happens due to mutation, or that happens due to any like change in the DNA section. That is not transmitting sexually. वो अलग चीज होता है, नहीं होता Akbar, don't worry. Okay, so this is HIV/AIDS. HIV/AIDS can be a sexually transmitted disease. Okay, this can be a sexually transmitted disease. Okay, so this is very simple. Like what happens, first one, as I told you, a virus will be there. It is HIV. Can anyone tell me what is the full form of the HIV in the chat box? Chat box में कोई भी बता देगा मुझे HIV का full form क्या होता है? What is the full form for HIV? HIV के लिए full form क्या है? Can anybody tell me in the chat box? Exactly, Jayashree. It is human immunovirus. Exactly. No, Akbar. Not exactly. It is human immunovirus. Okay. Human immunovirus. So this human immunovirus generally attack a person. ये क्या करता है? किसी भी person को attack किया, कोई भी person को attack किया, that person will get affected by this particular HIV virus. But when you test that particular disease, तो फिर test करने के time पे पता नहीं चलता in general. 5 to 10 year के अंदर जाकर के ये पता चलता है. पहले 1-2 साल में तो पता ही नहीं चलेगा तुमको. Okay, this leads to a condition that is called, this leads to a condition after certain years, like 10 to almost like 5 to 10 years के आसपास जाकर के तुमको पता चलेगा कि उसको HIV है करके. And this leads to a situation called AIDS. We don't know, like even I don't know whether there will be HIV virus in my body or not. Okay, because initial days में HIV का नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है कि वो अपना इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सके. HIV generally don't show, never show any kind of symptoms. Okay, when it enter into the body, but later on when the number of the HIV infection increases, when HIV infection increases, this leads to a condition that is AIDS called AIDS, in which the full form of the AIDS is like acquired immunodeficiency syndrome. Acquired, it is acquired by the effect of the HIV. HIV के effect की वजह से acquire हुआ है. Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome is a group of symptoms. Syndrome का मतलब क्या होता है? Syndrome is nothing but it is like given as or considered as a group of symptoms. Group of symptoms को syndrome कहा जाता है. Okay, group of symptoms को syndrome कहा जाता है. Okay, so now let us talk about this particular thing. यहाँ पे अगर बात करेंगे तो HIV/AIDS जो होता है acquired immunodeficiency syndrome होता है, group of symptoms होता है syndrome मतलब. और अगर वायरस ने अटैक किया तो इसकी वजह से बहुत सारा symptoms देखने को मिलेगा, because this particular HIV virus is directly going to attack the T cell, helper T cell, which is quite important. This helper T cell is going to take the information for to B cell. ये क्या करता है? B cell के पास जाता है. B cell के पास जाता है ना, तो B cell को पास जाने से पहले ही हेल्पर T cell को मार दिया जाएगा. So the information will not be reaching to the B cell. B cell के पास information ही नहीं पहुंचेगा. No information will reach up to B cell. No info or information reach up to B cell. B cell के पास कोई information पहुंचेगा ही नहीं, और अगर नहीं पहुंचा तो फिर Okay, so next will be decrease in count of the helper T cell. फिर तो अपना immunity down ही होने है.
ठीक है, फ्रॉम 950 mm टू 100 mm तक डाउन, इतना से इतना तक डाउन कर जाएगा इम्यूनिटी। समझ लो कितना होगा, मतलब हेल्पर टी सेल का जो काउंट होगा इतना से इतना डाउन हो जाएगा, हेल्पर टी सेल का काउंट फ्रॉम 950 mm to 200 mm, and this leads to opportunist infection. And what do you mean by opportunist infection? Opportunist infection is the infection which causes due to opportunities. Opportunity मिला and that opportunity की वजह से इन्फेक्शन हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो उसको कहा जाएगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। आया ना समझ में सबको? अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन इट इज लाइक दैट ओनली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? आया समझ में सबको? ठीक है अभी? सो दैट इज अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन। Hope it is clear to everybody. So when HIV is attacking our body, our immunity will lose its power, and when there will be less immunity in our body, जब immunity down हो जाएगा, okay, at that time various pathogen can enter into our body because our body has been weakened now, weak हो गया है body, तो कोई भी pathogen enter करके infection कर सकता है, and that particular phenomenon is called opportunistic infection because all other pathogen got an opportunity to infect our body. That is opportunistic or opportunist infection. I hope this is clear to you people, right? I'm moving to the next slide. Before that, take a screenshot or note the things, then click on yes option. Akbar Ali ka hua hai, Jayashree and Muhammad Raja. Is this clear to you people? If clear, then click on yes option. Take a screenshot before clicking on yes option. Well, so need not to ask this question because you have already seen the answer, I guess. Anyway, let's check how many of you can answer to the question. I'm launching poll for this question now, and I hope I need not to read the question. Question is like adenosine deaminase, adenine deaminase, adenosine diaminase, adenine diaminase. Which of the following is the full form of for ADA? एक बार देख लो, फिर उसके बाद बताओ क्या होगा फुल फॉर्म। ADA का फुल फॉर्म क्या है? 66% people have chosen their answer. Okay, they are super active in the class. They are answering continuously. I want remaining people to answer to the question. 30 seconds gone. Last 30 seconds remaining. Okay, guys. Last 20 seconds remaining. Last 20 seconds remaining. I want rest of the people to answer to the question. Last 20 seconds remaining. Last 10 seconds. Okay, I'm ending the poll now. Sharing the result with the people. The result, it's very simple. Option A is chosen by everybody. B, C, and D is not chosen by anyone. Let me stop sharing, then I'll come to the point. ADA, adenosine deaminase. Adenosine deaminase. एडिनोसाइन एडिनाइन ये नहीं है, एडिनाइन ये नहीं है, एडिनोसाइन दोनों है, इन दोनों में से एक होगा, एक है डी एमिनेज, एक है डाई एमिनेज। स्पेलिंग एरर है थोड़ा सा, ई और आई, ठीक है, ये नहीं है, ये हो गया डी एमिनेज, नॉट डाई। डाई मतलब 2 बार एमिनेज होगा, डी मतलब नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर HIV एड्स, फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है, ठीक है। जो भी मैंने वहां पे बताया था वो सारा चीज ही दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ लिखा है उसके बैकग्राउंड के बारे में, हाउ इट, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुआ, कौन पहले अफेक्टेड हुआ था, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन हियर। अफ्रीका चिंपैंजी मीट, अमेरिका सिंड्रोम, ग्रीड, पहले इसको कहा गया ग्रीड, ग्रीड के नाम से जाना गया, और ग्रीड से फिर ये बढ़ करके बना अपना ग्रे रिलेटेड इम्यूनिटी डिसऑर्डर, जिसको कहा गया ग्रे रिलेटेड इम्यूनिटी डिसऑर्डर, ग्रीड, एंड फ्रॉम दिस ग्रीड नाउ ये फिर आगे बढ़ गया और अब इसका नाम बन गया HIV एड्स, ठीक है। इन डिटेल अगर देखेंगे तो 1 सेकेंड, इन डिटेल अगर देखेंगे तो ये ऐसा ही है। ओके, अफ्रीका में देयर वर सम लाइक पीपल, ओके,
they were mating with the chimpanzee, I guess, and from that chimpanzee disease मैन में आया, एक इंडिविजुअल में आया, that individual met with some other individual, उसको हुआ, और इस तरीके से मेटिंग से फिर ये धीरे धीरे हुआ है। और कुछ लोग कहा जाता है, मतलब दिस इज ए स्टोरी एंड सम डिफरेंट स्टोरीज लाइक people of Africa, they ate chimpanzee meat, and from that chimpanzee meat this particular disease has been originated. Okay, HIV का full form है HIV human immunovirus. Okay, and other things related to HIV is acquired immunodeficiency disorder, group of symptoms syndrome. Okay, attack T lymphocyte and macrophages, ये भी बताया। First detected in homosexual male, that is USA में 1981 में homosexual man, ठीक है, मैं फर्स्ट देखा गया था एक मेल में जो कि होमोसेक्सुअल था। ओके, इन इंडिया 1986 में चेन्नई में पहला केस देखा गया था। इन इंडिया 1986 चेन्नई में पहला केस। ओके, सो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी एक बार देख लेना, कभी भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। होमोसेक्सुअल यू मस्ट नो, होमो मींस सेम एंड सेक्सुअल, सो सेम सेक्स वाले अगर आपस में मेल और फीमेल एंड फीमेल, दे विल बी having intercourse, or they will be having I can say they will be mating with one another, then that will lead to homosexuality, or I can say not exactly homosexuality, that will lead to, and homosexual male में USA में पहला केस देखा गया था। This is all about. Okay, next one is your HIV virus के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत आइडिया HIV वायरस का। HIV वायरस इज ए रिट्रोवायरस। ओके, सो ये एक रिट्रो वायरस होता है। रिट्रो मींस रिवर्स वायरस, रिवर्स वायरस इन द सेंस इनके केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। फ्रॉम दैट आरएनए दे प्रिपेयर डीएनए प्रिपेयर करते हैं उसी आरएनए से, ठीक है। ओके, वायरसेस वाज नेम्ड वेरियसली SCLV3, STLV3, LAV, HIV1, HIV2, ये डिफरेंट नाम से जाना गया था। SCLV3 जो है वो ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस के नाम से जाना गया, जिसको ब्लड कैंसर होता है जिससे। ओके, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस। STLV ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस 3। ओके, LAV लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। HIV1 मोस्ट कॉमन इन इंडिया, HIV2 मोस्ट कॉमन इन अफ्रीका। ये लेस विरुलेंट होता है, मतलब इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। लेस विरुलेंट इन द सेंस इट इज नॉट दैट मच इन्फेक्टिव। Not much dangerous, not much infective. Whereas if you are talking about HIV1, most common in India. इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर HIV वायरस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? Take a screenshot, then I'll be going to the next slide. Okay. Structure of the HIV virus, that is in detail अगर देखोगे तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है। So इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कोर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट, आउटर कोट जो होगा वो 18 P18 का, इनर कोट जो होगा वो P24 का। कोर इज कवर्ड विद लिपोप्रोटीन GP120, GP41, a lot of things are given here। ये तो अपना NCERT लेवल का नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट योर नीट लेवल का थिंग जो है, ठीक है। So नीट के लिए हम लोग देख रहे हैं, so that is why we need to look into the structure of the HIV virus, and we'll look into the structure of the HIV virus properly in the next class. Okay, so last 5 minutes is remaining, and for today this much only. If you have any kind of doubt, just let me know in the chat box, I'll explain it to you. कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है अपने को तो मेरे को पूछो, मैं बताता हूँ तुमको। ठीक है, उससे पहले नाम याद रखो, ये जो नाम से ना ये इंपॉर्टेंट है। SCLV, STLV ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस 3, ओके, देन HIV1, HIV2, LAV, ये इंपॉर्टेंट है। लिम्फो एडिनोफाइन एसोसिएटेड वायरस, दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ द HIV वायरस। मींस आई मीन लाइक these are different HIV viruses, means HIV का different variant है अगेन।
Like कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का डिफरेंट है. Not now, Mohammad Raja, not now. She is on leave right now, so that's why. Okay. So remember this one, HIV virus has a different name. 1, 2, 3, 4, 5. These are different variant of the HIV viruses. SCLV, STLV. L in one case, that is leukemia. C for cell. STLV, T lymphocyte. TL means T lymphocyte virus. Okay. Okay. And LAV, adeno lymphoadeno. LA means lymphoadenopathy. Lymphoadenopathy associated virus. Okay. HIV, you know, most common in India. One or second one जो है वो अफ्रीका में ज्यादा virulent होता है. इंडिया वाला कम virulent है अफ्रीकन वाला. Okay. So this is all about today. Well, I am launching teacher NPS poll now. Please vote for me in the teacher NPS poll and just let me know if you have any kind of doubt. I'll explain it to you. And if you don't have any doubt, then we'll proceed towards the closing of class. Vote for me in the teacher NPS poll if you like my class. Okay. Let me know in the chat box if you have any doubt. Thank you, Jayasri. Pretty well. Okay. Let me know if you have any kind of doubt, guys. Do you have any kind of doubt? No doubt from Akbar Ali, Jayasri and Mohammad Raja. Do you have any doubt? People from YouTube, do you guys have any doubt? Second, let me check. Yeah, people from YouTube, do you have any kind of doubt, guys? If you have any doubt, let me know. Okay, then we can end the class now. Thank you everybody. Bye bye.